So hello everyone. This is in a continuation of day 5 of our foundation course. So in the last class, if you remember, day 4 जो हमारा था, उसमें मैंने mitosis की वीडियो डाली. तो अब हमारा जो next part है, this is coming syllabus of class 9th in CBSE, and it is included after the cell chapter, which is also good because in 11th class दोबारा हमारा जो unit number 3 है, उसमें cell structure as a unit describe होता है, बायोमोलिक्यूल्स की क्लास होती है, मतलब चैप्टर प्लस में पूरा, और देन इसके बाद एक मियोसिस की क्लास होती है. सेल साइकिल मतलब इसको माइटोसिस मियोसिस एक्सप्लेन. तो माइटोसिस मोर और लेस जो हमने फ्रेमवर्क पढ़ा है कि व्हाट इज द सेल साइकिल, उसमें अलग-अलग फेजेस होते हैं. सिमिलरली मियोसिस में वही फेज होता है, लेकिन ये बहुत ही यूनिक है. ये सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में मिलता है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. Means this is the most beautiful essence of life science. Display variations. We talk about variations. You talk about adaptability, better evolve. Evolution of better characters. And even survival rate is high. आज हमने बहुत major last जो हमारे लोग साल गए थे pandemic में. Why there was like a particular type of specific regions who have been more influenced by the pandemic virus attack, and why not everyone universally? Why it was not universal for everyone? Reason is that we are not clones. हम clones नहीं हैं. हम genetically variants हैं. Genetically हमारे अंदर जो DNA है वो vary करता है. ये DNA की variations होती कैसे हैं? ये इस chapter का, इस topic का essence है. इसी की वजह से variability आती है, variations आती है, और हमारे अंदर और better adaptability होती है. ये एवोल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. इसी को मियोसिस कहते हैं. इट इज वन ऑफ द वेरी यूनिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन. जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने एक प्रेजेंटेशन, एक वीडियो यूज की है इसमें, कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस एज अ सेल डिवीजन हैज वेरी स्पेशल रोल टू फॉर्म द gametes, right? So I will be just showing the picture, usage of this picture, but the narrator will be myself only. तो इसमें हम देख सकते हैं कि क्यों एक क्वेश्चन है कि when the parents they all look different and then the kids, the siblings look so different, unexpectedly they are clones and that too identical. तो वो एक अलग बात हो जाती है. They are exceptions, but more or less अगर हम बात करें इसकी कि why this meiosis is there taking place, there is a reason behind it. So let's talk about that reason. So what we see here in this variation, आप देख सकते हैं, so this is a reproduction like process जिसमें हमें cell division meiosis को introduce करते हैं. Mitosis जहाँ पे cell growth चाहिए वहाँ पे होता है, but this is meiosis, right, which is taking place. So here we can see that there are two types of gonads in the male and female reproductive system. In the male it is the testes, in the female it is ovaries. The testes and ovaries are known as gonads. They produce a special type of cell by meiosis. Like this is inside the testes, seminiferous tubules, where exactly the meiosis is taking place, and by the steps of meiosis, this haploid sperms are produced. So it is very important to understand the class of haploidy. मैं आपको class of haploidy बताती हूँ. इसमें दिखा रहे हैं कि meiosis 1 एक reduction division है, meiosis 2 is same as what mitosis is all about. So this is a comparison. In mitosis एक single 4 steps के अंदर complete हो जाता है. Diploid है, तो diploid है, लेकिन meiosis में diploid parent cell हमेशा haploid parent this daughter cell produce करता है, जिसको gametes कहते हैं. Cycle almost same होती है, same interphase G1S G2 phases होते हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि S फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स की फॉर्मेशन हुई है. पर दो है हम वेरी डिस्टिंक्ट, अभी वो इंटरफेस में है, एंटेंगल्ड है ये. नेक्स्ट यहाँ पे सेंट्रियोल्स में डिवाइड हो जाती है. इंटरफेस में ये भी हमने माइटोसिस में पढ़ा, तो ये उसकी सिमिलरिटी है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो यूनिक चीज बनती है, डीएनए डुप्लीकेशन हो रही है. दोनों कॉपीज डीएनए की सिस्टर क्रोमैटिड से जो सेंट्रोमियर से अटैच्ड एक नैरो कंस्ट्रक्शन है, जिसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स का होता है. एंड दिस इज द सेंट्रियोल. और आप देख सकते हो हमें कि प्रोफेज 1 शुरुआत होती है. क्या होता है? होमोलोगस पेयर. सो बिफोर वी कम टू दिस सिनेप्सिस और होमोलोगस पेयर का कांसेप्ट, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट
Diploidy condition जैसे मैं बता रही हूँ बहुत जरूरी है समझना कि what is exactly diploidy all about. So let's talk about diploidy. इसमें क्या होगा diploidy condition में, right? What is diploidy? Diploidy is that inside the nucleus, this is the cell and this is the polynucleus. This is cell, this is nucleus of the cell. और इसमें DNA content है, genetic content है. अगर source of this genetic material कौन होगा? Source of this genetic material कौन है? So that is either one of the parent, is it one parent, or there are two sources of genetic material जिसको हम अलग कलर्स दिखाते हैं just to differentiate. ठीक है? तो जितने पेरेंट्स का एट अ टाइम एक पेरेंट अपना एक सेट ऑफ क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें. तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक सेल है, तो एक सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस में there are two set of genes which is in that particular population. तो एक सेट को बोलते हैं, वन सेट को बोलते हैं सिंगल. अगर हम बात करें जैसे ये वाला एक सेट है, इसको बोलते हैं n, स्मॉल n से डिनोट करते हैं, जिसको कहते हैं हैप्लॉइड. अब क्योंकि इस सेल में दो सेट्स हमें दिख रहे हैं, दो सेट्स ऑफ we can see the genes are there, that means from two different sources of parents, so इसको बोलेंगे हम diploid. Similarly, अगर three sets of genetic material fuse होता है एक सेल के अंदर, उसको बोलते हैं triploid. Triploid condition is only naturally seen in plants in the process of double fertilization that you study in life process of class 10 foundation. उसमें एक चैप्टर आता है that is sexual reproduction starting methods. उसमें वो पढ़ाया जाता है. I will give you the video for that. Triploid वहाँ करता है जिसका वेट होता है formation of endosperm. ध्यान रखना, ये ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकता, ये एक न्यूट्रिशनल बैकअप. It cannot find the same, form the same creature, क्योंकि ये species same नहीं हो सकती. हर species जो कि diploid है, दो sets chromosomes के लेके चल रही है, one from one of the parents, either of the parents. इस तरह से 2n बनता है. 2n ही species की formation करता है. 3n is not that species, it's endosperm as a nutritional backup. इसको आगे जाके हम cotyledons भी कहते हैं. So this is how it is. One set is haploid. अगर यहाँ पे दो सेट्स है तो डिप्लॉइड. सिमिलरली मियोसिस पढ़ने जा रहे हैं तो हम दोनों पेरेंट्स के जेनेटिक मटेरियल को दो अलग कलर से शो करते हैं. लाइक हियर आई हैव यूज्ड अ कलर पिंक एंड अ ग्रीन. दैट मींस दोनों का जेनेटिक बैकअप जो आया है मटेरियल का, ये अलग अलग पेरेंट्स का आया है. डिप्लॉइड सेट. दिस इज अ डिप्लॉइड सेट. ठीक है? So this is the concept of haploidy, diploidy, that is ploidy conditions. तो मियोसिस में क्या होता है? There is a loop. मियोसिस हमेशा एक डिप्लॉइड पेरेंट से शुरू होगा और जो डॉटर सेल्स बनेंगे, राइट, देयर विल बी 4 डॉटर सेल्स. तो जो 4 डॉटर सेल्स बनेंगी 1 2 3 4, there will be 4 daughter cells and they will be all haploid. Haploid जिसमें से दो जो सेट्स होंगे, क्योंकि मुझे कलर वही यूज करना है, किसी कलर का बहुत बड़ा लगेगा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से. ये नहीं कि कलर ही ऐसा होता है. तो यहाँ पर से दो ये सेट बनाया और एक मैंने आधा बना के छोड़ दिया ऐसे. एंड देन आई मेक इट ग्रीन वन. यस, सो दिस इज वन ऑफ द कलर्स. एंड इसमें आप देख सकते हो थोड़ा सा कम ग्रीन है और इस वाले में मैंने थोड़ा सा ज्यादा ग्रीन लिया. मतलब दोनों पिंक और ग्रीन है. अगर आप देखो सेट नंबर 2 और 3 में दोनों पे पिंक भी है और ग्रीन, इन द सेंस दो जेनेटिक मटेरियल का कॉम्बिनेशन है, दो पेरेंट्स का डीएनए मिक्स हुआ है. दिस इज नोन एज, दिस स्टेप इज वेरी यूनिक इन मियोसिस, जिसको कहते हैं जीन रिकॉम्बिनेशन. दिस इज जीन रिकॉम्बिनेशन, राइट. और जो आप एक्सट्रीम देख रहे हैं आप 1 and 4,
इसमें हमने एक सिंगल यूज की डॉक्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट का एज यूजुअल डीएनए का सेट है और दूसरे वाले में जीन का एज यूजुअल सेट है। मतलब दो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस में है और जीन कॉम्बिनेशन भी है, लेकिन परसेंटेज बहुत वेरी करता है। जिस तरह से ये सेग्रीगेट होंगे और नेक्स्ट ऑप्शन में एक्सप्रेस होते हैं, डेफिनेटली पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑलवेज टॉप्स अ चाइल्ड, मतलब हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, मतलब ऑलवेज इट इज मोर देन 50%, क्योंकि आप देख सकते हैं 50% आउट ऑफ 4 2 आर पेरेंटल 2 आर रिकॉम्बिनेंट्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बनता है चांसेस 50-50 चांसेस 50 और 50-50 चांसेस का बन रहा है यहाँ पे। लेकिन होता क्या है प्रैक्टिकली देखा जाता है 50% से भी प्लस पेरेंटल वाला जीन कॉम्बिनेशन ज्यादातर जाता है इन द गैमीट्स एंड रिकॉम्बिनेशन वाला लेस देन दैट, ठीक है। सो रिकॉम्बिनेशन इज लेस देन दैट। So this is how it is. तो ये meiosis का एक बहुत ही important concept है, right? So this is about the ploidy. Ploidy होती क्या है? Meiosis ने सब क्या किया? Meiosis ने एक fixed ploidy बना रखी है mind में कि daughter cells जो है वो तभी बन पाएंगी haploids जब उन्हें जो the parent है myocyte होता है जो meiosis से part लेता है, parent cell is always known as with the term myocytes. So myocytes are those cells which take part in the meiosis. They are always diploid, that is the condition, and after the process of meiosis, they are forming 4 haploid daughter cells. And अगर ये sperms में है या pollens में, so they are definitely the sperm one cell myocyte. There are 4 pollens or 4 spermatozoans. But in case of females, out of 4, 3 regenerates, 1 exists. Like the egg is 1, so that entire thing. And plants also ovules. तो जब मैं उस चैप्टर में बताऊंगी क्लास 10 फाउंडेशन के चैप्टर में I will explain that. ठीक है, तो इस तरह से हम प्लॉइडी और meiosis के पहले प्री कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं क्लासरूम्स में, and then we further proceed that what are the steps of meiosis, right? So this is about the beginning. So we can see why the gene recombination has taken place. Before they segregate, before they are separating, they have exchanged their pieces of DNA. So that's how you get your ancestral. You have the chances. Every living organism have the chances to receive the ancestral DNA segments. Just because depending on recombinant kitna mila or pure parental side kitna mila. So this is how it works. Next, अब हम बात करेंगे about new share. I just go for that video. Now, what are the steps? अगर हम steps की बात करें, let's take care of this. So here we see the steps. Right. So that was basic introduction we've already seen, and we have already seen about the gametes, the difference. So let's see further what happens. Now they will explain you what about the meiosis में होता क्या है, phases भी हमने explain कर दिए कि क्या होता है। तो sister chromatids में क्या होगा, please सुनो। ये वाला जो phase है इसमें क्या show करना है? So what we want to show it here is, yeah, ये जो pairing हो रही है, this is a pairing. You can see that suppose U is one of the parent, P is one of the parents, they are getting paired. Pairing code. This is a very unique feature in meiosis, which doesn't take place in mitosis. So this is in prophase 1. So prophase 1 is the most unique feature in meiosis, right? So the prophase 1 is the most unique feature in meiosis. I'll show you. Like this is the interface where exactly the DNA content is getting doubled. And how they are, ensured कि अलग ना हो जाए same copy of DNA. जब जरूरत होगी तब वो सेपरेट हो, उसके लिए आप देख सकते हैं येलो डॉट्स, दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रोमियर, इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर these are the two sister chromatids. Actually sister chromatids है क्या? So these sister chromatids are actually in this condition. I can show you with the white color. Yes. So like this is nothing but a segment. This is the entire length of a DNA which is running. So this is the entire length of a DNA thread which is there. Right.
So this is a double copy of the DNA. एक already था copy और दूसरा double हुआ है. So now these two are known as sister chromatids. And how are they attached? They're attached with a centromere. Okay, centromere. So when it is happening, in which phase is it happening? It is happening in the S phase, right? So you can see here, this is all double DNAs. और ये है centrioles जो separate होके बट opposite side पे चलेंगे. This is there. Now, the next feature if you see, now you know the concept कि sister chromatids को क्या कहते हैं. Sister chromatids में क्या question होगा मेरा? Is the DNA same in both the sister chromatids? Yes. Is the DNA copy same in the non-sister chromatids? Your answer will be no. So who will take part in gene recombination? जिन दोनों के DNA same है, वो recombination में part लेंगे या जिनके dissimilar DNA है? Obviously, जिसके dissimilar DNA है. So who are they? Non-sister chromatids. इसीलिए homologous pair जब बनता है. So this is the formation of homologous pair, and this process is known as synapsis. You can see here, this is synapsis. और इस तरह से homologous pair है. यहाँ पे कितने sets of chromosomes हैं? 3. There are 3 sets of chromosomes. मतलब इस diploid cell में, just to make the concept easy. Otherwise, here in human, there are 23 pairs बनते हैं, right? If it would have been a human cell, the human cell में कितने बनेंगे? So, human being or human cell is going to be a diploid set for 23 pairs. So, as in meiosis in a human being shows 23 pairs, but here it is just one pair, 1, 2, and 3. Just to make the diagram simple. Okay? Just to make you understand the concept. चाहे ये 23 है, चाहे 26 pairs हो, तो जितने भी pairs हो आपके वहाँ पे उनके chromosomes है, उसमें homologous pairs, जिनकी what is homologous? Homologous means जिसके chromosomes जो हम देख रहे हैं, suppose this is one of the pair, ठीक है, with this is the sister chromatid and this one is another one, and I make it shaded. जब हमें single color भी कभी use होना होता है, we can shade one of them. एक shaded है, दूसरा non shaded है. जब मैं सिर्फ आपसे एक पेंसिल या एक कलर यूज करें, तो it is preferred कि आप 2 colors यूज करें. This is easily available in your with you. The 2 types of pen, black and blue, you can use. So like there are 2 different chromosomes, but homologous means अभी gene है. इसमें हम देखेंगे जो gene of interest है इसके अंदर. Let's make it red. Yeah. So this is a gene location for hair color. Suppose ये वाला जो gene है वो hair color के लिए responsible है, ठीक है? Hair color. तो हम देखते हैं कि इससे exactly जो इसका homologous pair है, उसमें भी उसी लोकाई पर hair color के लिए responsible gene है. So that is how they are homologous to each other. ठीक है. अब ये दोनों फीचर्स जो हेयर कलर के लिए रिस्पांसिबल है, ये दोनों अलग अलग तरह के यूरोफिनोटाइप रख सकते हैं. मतलब अपीयरेंस हो सकता है ये ब्लैक हेयर है, ये ब्राउन हेयर है, पेरेंट का जीन. तो डिपेंड करेगा कौन सा वाला सेगमेंट नेक्स्ट गैमीट फॉर्मेशन में रैंडमली कौन सा मेटिंग में यूज होगा, उसके ऊपर डिपेंड करती है कौन सा जीन एक्सप्रेस हुआ हेयर कलर का. So if the two parents have different hair color, but which type of hair color will be there in the child, in the offspring, that is completely a random selection, right? This is why in the population we all portray so much of diversity in our features. So homologous pair में sister and non-sister कौन होता है? कौन है दोनों sisters? ये दोनों जिनके genes DNA same copy है. ये एक दूसरे के सिस्टर है, ये वाले एक दूसरे के सिस्टर है. लेकिन नॉन सिस्टर कौन है इन दोनों में से? इन दोनों में से नॉन सिस्टर कौन होगा? So the non sister will be this and this pair suppose. So like एक कोई भी एक क्रोमैटिड इसका और एक क्रोमैटिड यहाँ से, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए कौन है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, but they are homologous. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, इनके बीच में जेनेटिक डीएनए सेगमेंट एक्सचेंज होगा, जिस स्टेप को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, which is one of the unique feature of meiosis.
right? So this is the very important essence of meiosis. इसको दोबारा repeat करके सुन सकते. Next, the next step. So let's talk about the next step. So this is about the prophase which is taking place. Now this is a tetrad or a bivalent. क्यों? Bivalent जब वो sister chromatids बहुत visible नहीं है और जब वो उसके एक स्ट्रैंड अलग-अलग दिखती हैं तो वो sister chromatids इकट्ठे बहुत क्लियरली दिख रही नहीं आपको. टेट्राड बोलते हैं. यही एक important step है जिसमें crossing over होगा. So this will be there will be a crossing over and you can see they have exchanged their parts of the DNA segment. This is known as crossing over. Now the nuclear, when this complete step is completed, when this part is completed in prophase 1, अब centrioles will move towards the poles. अब कुछ वैसा ही प्रोग्राम शुरू हो रहा है जैसा माइटोसिस में हो रहा था. ठीक है. अब ये जो सिस्टम जो ये homologous pairs है after the exchange of pieces, they have been attached. You can see. So this is one thing very important here to understand. यहाँ पर ये जो attachment भी है, ठीक है. So ये कहाँ पे शुरू होती है? This happens at the equatorial plate. Suppose metaphase plate बनाएंगे हमारा metaphase plate. अब यहाँ पर अगर ये arrange पहले definitely यहीं arrange होंगे. इसलिए 1 है. This is second homologous pair. This is the third homologous pair. Arrange यहाँ पर randomly आप लेकिन सोचो कि यहाँ पे ये 1 2 3 ऐसे arranged हुए हैं. Separate कैसे हो रहे हैं? होता क्या है? यहाँ से एक स्पिंडल है. So one spindle ये वाला है. ये वाला अगर इस ब्लू वाले से अटैच्ड है तो इधर से ये स्पिंडल पिंक वाले होमोलोगस पेयर से अटैच्ड है. दोनों तरफ से ब्लू दोनों तरफ से पिंक यहाँ अटैच नहीं होगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है to understand कि ये एकदम डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हुआ कैसे. तो यहाँ पर फर्स्ट जो सेग्रीगेशन है, दिस इज द सेग्रीगेशन of homologous pair after exchange of DNA segments. Means genes भी पार एक दूसरे में exchange हुए हैं between non-sister chromatids. That means क्रॉसिंग ओवर के बाद ये वाला स्टेप होता है. क्रॉसिंग ओवर होने के बाद नाउ द क्रोमोसोम्स, so homologous chromosomes they will separate. So this is a very important step जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि क्यों गैमेट्स में वेरिएशन आने वाले हैं. तो ये बहुत रैंडम है. जरूरी नहीं कि सारे पिंक एक तरफ है और सारे ब्लू एक तरफ है. ये आईपीएल टीम नहीं है, राइट? जिसके सारे टीम के एक कॉमन टी शर्ट कलर्स है वो एक टीम होती है, ऐसा नहीं है यहाँ पर. दिस इज अ रैंडम गेम, अ रैंडम प्ले वेयर द एनी ऑफ द मतलब यहाँ पर हमने कलर से शो किया है. सो एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ मैटरनल एंड सम मैटरनल वन साइड एंड वाइस वर्सा ऑन द पोल्स, ऑपोजिट पोल्स में मिक्सिंग हो, मतलब वो रैंडमली सेग्रीगेट हो रहा है. तो हो सकता है यहाँ पे दो ब्लू पिंक और ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या रह गया, 2 blue and 1 pink. इस तरह रह गया. तो इस दोनों पोल्स पर रैंडमली ये सेग्रीगेट होते हैं. तो homologous pairs separate हुए because of their उनका जो एक कॉम्प्लेक्स है जिन्होंने उनको बाइंड रखा था उसको काइनेटोकोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं. अब वो डिसॉल्व हो गया है तो उसकी बाइंडिंग खत्म है. तो डेफिनेटली they can easily segregate and they can separate. So once this process is done, after this we see, then what we see here, we can see finally अब वो randomly pairs segregate हुए हैं. So you can see here माइटोसिस में यही डिफरेंस है. माइटोसिस के दोनों तरफ स्पिंडल है तो इसलिए सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो गया, लेकिन मियोसिस में नहीं होता है. मियोसिस में फर्स्ट सेपरेशन सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता. सिस्टर क्रोमैटिड एज इट इज पेयर सिस्टर क्रोमैटिड दोनों पोल्स पे चले जाते हैं इकट्ठे. यही डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस में. तभी मियोसिस में स्टेज पे हैप्लॉइड बन गया, राइट? सो दिस इज हाउ. So now, and you can see here so many options. All there are so many. That's why we have selected this particular presentation from the source. So this is how you can see. This is such a random process.
that anyone can go anywhere. So there could be a lot of options. ये नहीं कि जो भी बना हुआ है वीडियो में यही होता है, ऐसा नहीं है. So it could be any possible varieties, and that's how Yankees के पास बहुत probability है. Nature ने बहुत ज़्यादा variation produce करने की options रखे हैं. So this you can see here, and that is happening in the telophase. We say telophase में क्या होता है? Arms are directed towards the metaphase, this metaphase, and this centromere is attached with the spindle fibers pulling towards the poles from both the ends, and that's how the chromosomes split. So you know what? There is a huge number, like a lot of exact number. I will definitely miss it and give you the group. So the number of ATPs there is specific, and they are per chromosome that X amount of ATPs is utilized for its movement, right? And it's a quite a slow process, like few millimeter movement per minute के हिसाब से. That's a very slow process. Right? Because कोई भी DNA पे हम ज़्यादा टेंशन नहीं क्रिएट कर सकते सेपरेशन के टाइम पे. यदि DNA अगर टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो रैंडमली अरेंज होगा and that will cause mutations. तो इसीलिए ये जो processes होते हैं, they are very slow and complex to ensure that the correct cropping is done and correct separation is done without damage to the DNA. Now you can see cell ने दोबारा थोड़ा सा अपना जो condense जो था वो break condense उसने थोड़ा सा lose हो गया. लेकिन identity आराम से स्टेज पे देखो आप. इस स्टेज पे you can see there are cystic chromatids. So you can see here, like you can see this is the exchange piece. इसमें blueness ज्यादा है, pink कम है, ठीक है? और ये वाला piece देखो आप. इसमें you can see more pink and the blueness is less. This shows कि recombination बहुत ही minute की बाकी parental part है, right? So this was a pure blue वाला, प्योर पिंक वाला मिलेगा, ठीक है? इस तरह से क्रोमोसोम्स एक्सचेंज हो रहे हैं. यहाँ पर चलिए क्रोमोसोम्स एक्सचेंज हो रहे हैं. व्हाट वी सी इज, आपको ये ध्यान रखना है कि होमोलोगस पेयर्स होंगे, तो 3 उधर चले गए और 3 इधर आ गए. आप देख सकते हो अगर यहाँ पर भी इसमें ब्लू ज्यादा पिंक कम, जिसके काउंटर जो था दूसरा होमोलोगस पेयर वो पिंक ज्यादा ब्लू कम, तो उसमें ऐसे पार्ट्स एक्सचेंज किए हमने. यू कैन सी द डिफरेंसेस. मतलब इसमें जो भी ब्लू वाले में पिंक वाला हिस्सा शेड है, वो उसका ऑपोजिट शेड आपको पिंक पे ब्लू करवाना है. तो ये ध्यान रखना आपको, ताकि आपके ड्राइंग पे स्केचेस में गलती नहीं हो. Can you able to show this recombination से exchange piece? तो अगर सपोज ऐसे 2 strands हैं, अगर आपको exchange piece दिखाना भी है, तब कैसे दिखाओगे? सपोज दिस इज एंटायर पिंक, तो एक पिंक और एक व्हाइट है. अगर ये exchange होगा, what will be the result? The result will suppose like this, and we use a white. तो ये white है, obviously white का ये वाला हिस्सा वहां चला गया, तो यहाँ पे क्या होगा? Pink. This one. तो ऐसे ही आपको क्रोमोसोम्स में भी दिखाना, ठीक है? This has to be clear. And so next you can see cytokinesis before यहाँ पे there is a furrow formation and cytokinesis has taken place, but there is no interface. Okay, there is no interface as like every cell has. So there is no interface in meiosis 2 beginning. Meiosis 1 खत्म हुआ, ये बना first time 2 haploid cells, daughter cells, 2 haploid cells here and there. So now we will talk about the next step. So in the next, once they are separated, what we see is again the centrioles remove the holes, nucleolus, nuclear envelope disappears, mitochondria, endoplasmic reticulum, they are not visible under the microscope. And then you can see now the centromere. अब दोनों poles से centromere attach होगा, दोनों sister chromatids को separate करना है. ये बिल्कुल mitosis की तरह similar process है, जिसमें अब क्या हो रहा है? यहाँ पर centromere, yes, you can see the same single metaphase plate. वहाँ पे meiosis में double, meiosis 1 में 2 metaphase plate थी. यहाँ पर दोनों तरफ से दोनों तरफ से खींचा जाएगा sister chromatids, right? So you can see here now they are separate. So the cells have similar, you can see, and now they have again entangled.
ये पूरी तरह से entangled है rather. And now you get it. This is one of them is in the spermatozoa. Out of one, there are 4 haploid spermatozoans and the eggs. So totally depends on that. Which has been the gamete for fusion. Egg तो चलो कि degenerate होते हैं one stay करते हैं. तो जो भी इसमें था वो भी random में कौन सा वाले combination मिला genes का और sperm में कौन से होंगे and that to millions of sperms probability for one fusion of egg. So you can imagine how different the child would be from their parents because you never know which particular segregated piece has been in the offspring. So this is why we see here that while meiosis is a very unique process and important in sexual reproduction and reason for variation in the population, this is leading to speciation evolution. Agar clones hote to mass extinction ho jata. That's the reason behind it. Differences in their chromosomes, formation, crossing over. Right? That is the essence. Crossing over and separation of homologous pair in meiosis 1 and then meiosis 2, separation of sister chromatids also. Finally, with lots of combination options. Right? So definitely you go through this, you go through my lecture, revise it, make your notes, and definitely I'm going to send you a DPP for the practice in the group. Okay? Happy learning. Bye. Increases in an organism. Thing about it, students, this is something very important to understand. That suppose if the gametes, like how will you calculate how many gametes from one parent cell in meiosis to be produced? So the formula is 2 to the power n. N is number of ploidies. Suppose there are 3. So there will be 8 possibilities. If it is 2, n is 2, then how much? 2 2s are 4. So like this, you can find out this by this using the simple formula for the fast calculation that how many gametes varieties could be produced, right? So like suppose there are sometimes questions that there is a cell and by subsequent divisions, 1 lakh or 180, 130 lakhs cells are produced. So how many times it has divided? So you can use this formula directly, right? So finally we conclude with this. I wanted to show you this also. Independent assortment is a very important term. ये मुझे बताना था. So I am concluding now from here that independent assortment means that the gametes which are formed are of multiple varieties. So any of this randomly can fuse with in the zygote. That is independent assorted. And every character which has been separated, every character which is getting separated does not affect the other gene. So that is how the independent assortment works. That suppose one of the parent has one feature in a 2 combination, though combinations have, but it can segregate easily because of the steps of meiosis, right? Now finally it's over. Okay, bye.